So this is lecture 4 of income from house property AY 2022-23. This is for June 2022 attempt CMA intermediate. ठीक है, तो ये हमारा lecture 4 है income from house property का. तो हम यहाँ थे. So basically we had done little bit into let out property, but let me start from here. ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा आप लोगों को. So this is how you compute income from house property of a let out property. First is gross annual value. You take gross annual value. We'll see what are the 4 components of GAV. Okay, here we'll see gross annual value less municipal tax. You take only municipal tax which is paid by the owner. This municipal tax is not in accrual basis. Gives you net annual value. This is the first step actually. GAV less municipal tax gives you NAV. Okay, then there are 2 deductions. One is standard deduction, flat 30% of NAV, 30% of this, then interest on borrowed capital. So these 2 deductions you deduct from this and you get income from house property. Right. So first thing, so you'll be seeing this format more and more in future. Let's first talk about GAV. Okay, so now what is GAV? It is the earning capacity of the building. Okay, it's the earning capacity. It's called annual value or gross annual value. Okay, so there are 2 terms: gross annual value, net annual value. Both are different. They're separated by the municipal taxes. So now to compute your gross annual value, ये find out करने के लिए gross annual value 4 चीजों की जरूरत पड़ती है. We need 4 things. One is actual rent receivable. It's called actual rent received or receivable actually. Okay. So this shows you how much rent you will be receiving in that property. Right. So it's computed on accrual basis. And for benefits provided by owner, you remove the cost of benefits. So take de facto rent, which is rent minus amenities. Okay. Then actual rent received or receivable, you take out cost of furniture or amenities, all that. Note, outstanding rent is considered, but advance rent is not. This point we had seen. So you consider rent for the previous year, not outside it. Okay. Within previous year, all rent will consider, whether paid or unpaid. Okay. That is your accrual basis. Next is municipal value. Next important thing is municipal value. This is, as I told you, this is annual value of property decided by municipality. The municipality has records of all houses in its area. Right. So the annual value decided by municipality is gross municipal value. Always remember, gross municipal value is different from gross annual value. Okay. This is a part of gross annual value. Right. So, and here I told you, like for metro cities, you have so for metro cities, basically you have gross municipal value, then you are given 10% deduction. Okay. They give 10% deduction, and on this value, they charge water and sewerage tax. Okay, on this value, water and sewerage tax. Okay, so for this, I'll just show you, like just to give you an example on this. It will come down, but as we are here, मैं आपको बताता हूँ कि ये NMV का कैसे computation होता है. ठीक है, याद क्या रखना है आपको? NMV में आपको you take the GMV, gross municipal value, 10 for metro cities only. Okay, for metro cities only, these 4. Then reduce 10%. On this value, they give sewerage tax. Just remember this part. Okay, I'll show you. And for other cities, GMV is equals to NMV.
Again, you can get confused. This is not gross annual value. This is gross municipal value. Okay. And this is not net annual value. It is net municipal value. तो चलिए मैं आपको I'll just show you an example of this. ठीक है, ये कैसे ये कैलकुलेट होता है यही बता देता हूँ आपको. देखिए यहाँ पे हम we can if you see about municipal tax here, okay, it is a percentage of net municipal value. So for all other cities, gross and net municipal value will be the same. ठीक है, लेकिन और इसका conditions it should be paid during the previous year. Municipal tax जो है payment basis में, paid by the SSC. Okay, and unpaid municipal tax or paid by tenant, no deduction. It can be for previous year or earlier previous years. Okay, you can pay it for any previous year, that is fine, right? Because you will not be repeating it anyways. Once you have paid, you cannot pay again. ठीक है, तो ये इसके रूल्स है. We'll see this in problems. आपको we'll revisit it. तो यहाँ पे जो है I'll just tell you about that. जो हमने ये बताया देखिए आपका जो न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई. ओके, so here so calculation of GMV from NMV. ये कैसे करते हैं GM, वो मैं बता रहा हूँ मेट्रो सिटीज के ऊपर. Okay, so this is so so this is your GMV. ठीक है, suppose ये 100 है. Okay, तो ये जो है रिपेयर्स अलाउंस जो 10% देते हैं ना, वो रिपेयर वगैरह के लिए अलाउंस देते हैं. अच्छे से इतना आपको लगेगा करके. 10% is repairs allowance, तो -10, this NMV becomes 90. Okay, so here, okay, so and then here after that water and sewerage tax. Okay, so example I've taken is 5%. so 5% आपको 90 के ऊपर मिलेगा. ठीक है, तो ये होता है 4.5. this minus this, then this will be your final NMV. So in the problem if this is given, तो यहाँ पे हमारा बेसिक ये है, प्रॉब्लम में अगर ये दिया है आपको, तो आपको लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको ये चाहिए. ये फिगर से ही हम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करते हैं, नीचे वाले फिगर से कोई काम के नहीं है हमारे. तो ये है, तो ये कैसे निकालना है वो मैं बता रहा हूँ. ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल 20,000 आपका फाइनल एनएमवी आपको दिया गया है. यहां से अभी आपको यू विल गो हियर. ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल्स टू 20,000 इंटू 90 अपॉन 85.5. okay, this is how I'll calculate it. So basically what is the equation? If NMV is 90, then final NMV is 85.5. now if this is 20,000, okay, how much is this? correct, इसमें क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट. 90 into 20,000 upon 85.5. this is what I did here. इसमें into 90 upon 85.5. 20,000 में into 90 upon 85.5. ठीक है, so that then you will get this. ठीक है, and now you are here. now again to go up here separated by this percentage, you will do the same thing. so this will be is equals to this into 100 upon 90. later on we'll do, say I'll give you some sample problem on this. okay, so ये करेंगे, so then you will get the final value. now this is the GMV which you will use. so whether this value is right or wrong, let us check. ठीक है, यहाँ पे check करते हैं. so let me put it here. if this is your GMV, okay, 10% discount is this, correct. then this will be this minus this. okay, GMV minus repairs allowance, this will become this, correct, same figure you're getting. and then here this was 5%, right, again into 5%. if I do, then you should get 20,000, right. so our figures are correct. ठीक है, समझ गए आपको ये कैसे किया गया है. तो ये मैं बाद में, अभी फिलहाल इसकी जरूरत हमको नहीं है इमीडिएटली, मैं बाद में एक बार भी आपको बता दूंगा. ठीक है, तो एक दो बार मैं 2-3 बार बताऊंगा तो आपको समझ जाएगा कि क्या ये है.
इसका, ठीक है। प्रॉब्लम्स में उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बट स्टिल इट्स गुड टू नो। ओके, ठीक है, तो we'll move ahead. Okay. Sir, we'll repeat this again, na? Means later words. I'll yeah, we'll go Repeat back it to again. that later on, Shivam. Okay, we don't need it Okay, now, sir. Okay. because now we were here, no? So that's why I just told you like how this is, just to show you. Okay, later on we'll go back to it again. I'll show it to you with a problem. Okay, it's just like right now. Okay, sir. Right now, you forget that. For now, just telling you how this is useful. This equation is, you will get the final thing here, and from that you have to go up to get the gross municipal value. That's all. Okay. So this is like not fully completed from my end. We'll do several problems now. Then I will pick this up. I'll give you 1 or 2 problems on this. Okay. That time it will be clear. Okay. So where you took the figures from, just assume. Where? Just जो figures आप दिखा रहे थे वो आपने assume करी 20,000. हाँ, assumed figures. Okay. ठीक है, मैं सिर्फ ये आपको ये इस कर्व का रिलेशन बताना चाहता था कि कैसे फाइनल फिगर है तो मैं कैसे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकालूंगा करके। ओके, तो उसको हम रिविजिट करेंगे, ठीक है। फिर से सिर्फ जैसे मैं जस्ट एक इंट्रोडक्टरी चीज बताया आप लोगों को। देन थर्ड इज फेयर रेंट। सो फेयर रेंट इज रेंट ऑफ, इसको नोशनल रेंट भी बोलते हैं, सेम और सिमिलर लोकेलिटी। तो यहाँ पे बाजू वाले गली में सिमिलर हाउस किसी ने का 20,000 में दिया है रेंट, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमारा भी ऑलमोस्ट उसके जैसे ही होगा। जैसे ये एग्जाम, और इसमें क्या देखना है, किसी ने रेंट को 2000 में अपने फ्रेंड को दे दिया है, लेकिन नॉर्मली कोई बाहर का आता तो 2500 में देता, तब फेयर रेंट हम ये मानेंगे। ओके, एक नोशनल रेंट कितना है उस किसी बेसिस पे निकालते हैं आजू बाजू वाले घर में, ठीक है। तो ये हो गया, एंड देन लास्ट इज स्टैंडर्ड रेंट। ओके, ये चार, these are the 4 things which determine your gross annual value. So standard rent is rent of Rent Control Act. Okay, basically these are state acts, right? So it gives the maximum rent which you can recover from a tenant. This was to stop exorbitant rent being charged. Okay, so it just gives the maximum rent that you can recover. Okay, that is the only role of standard rent. So your rent can be below standard rent. Remember, it can be lower than standard rent. It cannot only exceed, right? It need not be equal to standard rent. Okay, ठीक है, समझ गए ना? स्टैंडर्ड रेंट पे एक मैक्सिमम रेंट बताता है, इसके ऊपर आप नहीं ले सकते, नीचे ले सकते हैं चलेगा, इससे कम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम किए थे, तो मैंने थोड़ा आपको इंट्रो दे दिया ताकि easier to do problems. Now computation of gross annual value, ठीक है। हम देखेंगे कि यहाँ कैसे GAV हम कैलकुलेट करते हैं करके। You are able to see the screen कि थोड़ा बड़ा करना है? Visible, sir. सबसे पहले you have to calculate RER, reasonable expected rent. This is step 1. There are 4 steps. Okay. So there are 4 steps. All the concepts which we have studied above will be using those concepts. Take a calculate RER. It is calculated as higher of gross municipal value and fair rent. Okay, up to a maximum of standard rent. This actually works out to be like this. I'll tell you. Here, no, but these steps, first 3 steps, remember this logic always: higher, lower, higher. Okay, remember this: higher, lower, higher.
So these two you have to use higher for these two. Okay. So after these two, you will get something here, right? Higher of the two will be one figure. Higher of the two is same this figure. Okay. Okay, this is this figure higher. Now here to a maximum of standard rent means how you have to do it is just put standard rent here as it is, just put this figure. Okay. And then out of these two, take lower. Okay. So this is how what you have done is you have used higher and lower. There is one more higher to be used from this figure, from the final figure you are getting here. I'll show that to you. ठीक है, इस तरह से होता है. तो मैंने इसका just reset it. ठीक है. So theoretically, technically, it is stated like this: higher of these two up to a maximum of standard rent. What you will do is take these two. Okay, find higher. Okay, you get higher here. Okay, then take standard rent. Put it here just as it is. Put it here. Take lower. So if you take lower of these two, you will get, say, let's put little. Okay, you will get this. So this is your RER. Okay. So just remember, RER is also called annual letting value. These secondary terms are also very important. ठीक है, ये समझिए. आपको ये स्टेप 1 कैसे करेंगे, प्रॉब्लम्स हम करेंगे, ये स्टेप्स करेंगे, तो आपको जो है ना अच्छी तरह से याद आ ध्यान में आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप 1. बहुत सिंपल है. ठीक है, हायर और लोअर की हमने बस. और ठीक है, वी हैव डन ओनली हायर एंड लोअर इन स्टेप 1. Step 2 is actual rent received or receivable rent less unrealized rent. So unrealized rent is something, say your house, you have given house on rent for 10 months. Okay, you've received rent for 9 months. Then the tenant ran away. Okay, he didn't pay for 1 month and ran away. Okay, so this 1 month's rent is called unrealized rent. Got it? This is that unrealized rent. So basically here your actual rent receivable, okay, less unrealized rent. It will always be ARR less unrealized rent you have to take. Okay. That is the only thing in point 2, nothing else. Just take actual rent received or receivable and less unrealized rent. Okay. Then, so unrealized rent you can deduct only if some rules are satisfied. Okay. It is called a rule 4, and these 4 conditions must be satisfied. Tenancy is bona fide, so it's real tenancy. Okay. And tenant has vacated the property, or steps have been taken to compel him to vacate. You are saying that no, I want to deduct unrealized rent, and still that person is staying there. So logically that doesn't hold, right? So either he should have vacated or you have taken steps to compel him to vacate. Defaulting tenant is not in occupation of any other property. So here you are saying he has not paid, and somewhere else you are giving him property on rent. That means here there is something wrong, right? You are claiming what is not there. That's why you are giving him another property on rent, है ना? तो इसीलिए थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि डिफॉल्टिंग टेनेंट कोई और प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए. लास्ट है, SSC has taken all reasonable steps to institute legal proceedings. ठीक है, जो भी रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स उसने किया है, या satisfied the assessing officer that legal proceedings will be worthless. इसका मतलब ये है कि सपोज 10,000 उसने वो देने का है, सपोज. ओके, unrealized rent is 10,000. You are saying everything else you have got, first 3 points are fine for you. You are saying if I go to court and all, I go to a lawyer, I'll have to spend 15,000 as it is. There's no use in going there.
If you convince your assessing officer, then it's fine. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है रूल 4 के कंडीशंस है. एक एक्रोनिम आपके लिए मैंने फ्रेम किया था, so you can use that acronym. तो सर फोर्थ पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिएगा प्लीज. फोर्थ वाला क्या बोल रहा है ना, ये पॉइंट का मीनिंग मैं बताता हूँ आपको. ये जो फोर्थ वाला है आपका, ये बोल रहा है कि या तो आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हो आपके इसके ऊपर, आपके टेनेंट के ऊपर आप कानूनी कार्रवाई करो, या असेसिंग ऑफिसर जो है ना, जो इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए आता है, उसको ये समझा दो कि कानूनी कार्रवाई करके कोई फायदा नहीं है. जैसे वो देने का ही है आपको 5,000, ठीक है, कानूनी कार्रवाई में आपके 8,000 खर्चा होंगे, तो मतलब नहीं ना. तो वो उसको आपको समझाना पड़ेगा, वन ऑफ द टू. ठीक है, ये मतलब है फिफ्थ पॉइंट. ओके. तो और यहाँ पे चलिए एक एक्रोनिम आपको याद रखने के लिए, ठीक है, ये थियरी में भी पूछा जाता है बहुत. ये 4 पॉइंट्स आपको रटना नहीं है, अपने मन से लिखते आना चाहिए आपको. तो आपके लिए एक्रोनिम क्या है? बोनाफाइड वेकेशन इन अदर प्रॉपर्टी इज लीगल. याद रखना, बोनाफाइड वेकेशन इन अदर प्रॉपर्टी इज लीगल. ठीक है, एक्रोनिम है ना, मेमोरी टेक्निक है. ठीक है, इसका खुद से कोई वजूद नहीं है इसका. सो बोनाफाइड टेनेंसी इज बोनाफाइड, वेकेशन का VAC. ओके, ये वेकेट द प्रॉपर्टी. ठीक है, और ये जो है अदर प्रॉपर्टी है, ये दोनों. ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग्स का लीगल. ओके, तो ये हो गया, हमारे 2 स्टेप्स हो गए जो हमने. so this is basically your, these are rule 4 steps, 4 not steps, 4 conditions which have to be fulfilled. Only then you will get deduction of unrealized rent. If you don't fulfill, you will not get the deduction. That's all. Okay, so first is RER, then second is ARR, actual rent received or receivable. Then third is compare the values in step 1 and 2, take the higher one. This is the third higher asset. Higher, lower, higher asset, right? First higher and lower were in first point. Third higher is here. Okay, always remember that, higher, lower, higher. Okay. Now this fourth point, I'll tell you later. So as of now, you don't go for the fourth point. This only comes good when there is vacancy. Okay, vacancy means difference between unrealized rent and vacancy is, vacancy is basically you have let the house out but you did not get tenant. तो आपने किराए से दे दिया है घर, लेकिन आपको किराएदार नहीं मिला, हो गया वेकेंसी. अनरियलाइज्ड रेंट आपको किराएदार मिल गया, लेकिन उसने 1 आधे महीने का आपको रेंट दिए बिना भाग गया, वो है अनरियलाइज्ड रेंट. ठीक है, वो दोनों में फर्क है. स्टेप 4 है, वैकेंसी का पॉइंट है, तो हम स्टेप 4 में बाद में आएंगे, बताऊंगा आपको. ठीक है, तो चलिए अब नाउ सेम थिंग इसमें देखते हैं, टैबुलेटेड फॉर्म में सेम 4 पॉइंट्स व्हाट वी स्टडीड नाउ. ओके, RER, gross municipal value or fair rent, whichever is higher, first higher is used, then just put standard rent here and then find lower of the two. Higher and lower are used and you got RER. You got RER. Then just put, next is put ARR minus UR. Okay, just put it here, right? And then take these two, RER and ARR minus UR, and take higher. You have used the third higher now. Higher, lower, higher. So this is how, by doing higher, lower, higher, you got the GAV. Okay, this point I'll tell you later, fourth one, don't worry now. When vacancy comes, we'll see that. This only holds good when there is vacancy, otherwise not. Okay? So now we are going to do problems for these, where we'll be using these first 3 steps. Okay. So now this problem is saying compute RER. It is not asking for all 4 steps. It's only asking you RER. Okay. Higher and lower. Only that much it's asking. So calculate RER from the following. Gross municipal value
ये दिया है, सब थाउजेंड्स में है, ठीक है। ये ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है, ये आपका फेयर रेंट है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप बताओ मेरे को, टेल मी हाउ यू विल सॉल्व इट। Sir, in house one, RER will be 10,000. 10,000, okay. In house two, it will be 14,000. House House two it will three, be, it will be no, you only have to see these two. 14,000. First you have to see only these two. Higher of these Okay, two. okay. Higher. This is 10,000. This is 16,000. Then 16, then 16, 16, 18, 17. 18, 17. 18, 17. Now you have this higher. Now we will put this standard rate below this here. Okay. And now we will do what? Lower. ठीक है, यहाँ पे हम लोअर करेंगे। अब ये दोनों का लोअर क्या है? 10 ही है ना, 10, 10 10 का 10 ही 14, है। इसका लोअर क्या है? 10, 14, 14, 16, 16. 8, 17. NA you not take as 0. 0 आएगा सर। 0 आएगा। NA का मतलब है नॉट एप्लीकेबल, यानी वहाँ रेंट नो कंट्रोल सर, 0 नहीं होगा। एप्लीकेबल ही नहीं है, 16, इसलिए वो 16 होगा 0 sir. नहीं होगा, ठीक है। वो आप कंसिडर ही नहीं करना है, वो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। NA अगर आ गया रेंट कंट्रोल, यानी वो एक्टिव अप्लाई नहीं हो रहा है। तो एक्टिव अप्लाई नहीं हो रहा तो वो रेगुलेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे जैसे रेगुलेट कर रहा है ना, यहाँ बोल रहा है वो 14 के ऊपर आप नहीं जा सकते बोल रहा है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन। 16 हो चाहे 16. 100 हो, कुछ भी हो, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। 16, ठीक है। ओके, नाउ दिस टू 8, 17. So this basically is your RER. So you can just write it as RER. This is your answer. Okay. This is your problem 1. So let us now go to problem 2. Where there is neither unrealized rent nor vacancy. ठीक है, यहाँ unrealized rent भी नहीं है, vacancy भी नहीं है. Okay, calculate GAV from the following house properties. Thousands में है, आपको 6 घर दिए हैं. ओके, तो यहाँ पे जो है आपको GMV दिया है होल ईयर का. ओके, फेयर रेंट दिया है होल ईयर का और स्टैंडर्ड रेंट दिया है होल ईयर का. तो ये तीनों यूज करके हम लोग ये निकाल सकते हैं RER. Correct? Yes, sir. We can use these three and calculate RER, and then we will use actual rent received or receivable, second step. Okay, and then we will get gross value, gross annual value. Okay, so let's do it. So for house 1 to house 5, so these 5, the procedure will be same. Okay, and for the 6th one, the previous year is only 10 months. Okay, all these are 12 months, so which is why we'll do this separately. So let's now do house 1 to house 5. ठीक है, तो चलिए ये मुझे जो है, so GMV and fair rent higher. First one is higher. What is higher of the two? 120. 120. Okay, then H2 130. 130, okay, H3 40. 140. 155, 140, 175. 175. 155, 175. ठीक है, ओके, यही कर रहे हैं. फर्स्ट वी आर डूइंग ओनली दिस. ओके, 6th वाला हम करेंगे बाद में. सो दिस इज पहला हायर हो गया हमारा. अब हायर के नीचे हम स्टैंडर्ड रेंट डालते हैं.
तो चलिए अभी नीचे डालने की जरूरत नहीं, ऐसी कंपैरिजन कर लेंगे ये और ये। तो 120, लोअर 120, 120 करेक्ट, 100, 100, 135, 135, 155, 165. ओके। तो ये हो गया हमारा हायर, और आपने लोअर करने के बाद ये मिल जाए ना, बेसिकली ये हमारा आर ई आर है, करेक्ट। दिस इज अवर आर ई आर यहाँ पे। अब जो है नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू टेक इज वी हैव टू पुट एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। ओके, ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू पुट बिलो दिस यहाँ पे, ठीक है। और फिर हायर करेंगे। चलिए इसका सोल्यूशन में जाता हूं मैं यहाँ। तो ये फर्स्ट स्टेप है यहाँ, जो आप लोगों ने बताया था मुझे, जैसे ये हायर और ये लोअर हमने किए, तो ये आ गया, ठीक है। ये 5 आ गया हमारा, यहाँ तक आपने बताया था, राइट। दिस इज व्हाट यू सेड। देन स्टेप 2 के लिए आई एम जस्ट पुटिंग दैट रेंट रिसीवेबल फिगर्स हियर। सी 100, 110, 135, 175, 100, 110, 135, 175, okay, as it is I am putting, ठीक है। सो यहाँ पे once I put this, ठीक है, H5 तक इसको छोड़ेंगे अभी के लिए। और now higher of the two, okay, higher of this and this, the third higher we are using up now, okay। Let's see the figures if you are agreeing with it। सब ठीक है, ये पांचों ठीक है, higher, yes sir. okay। Yes. So basically this will be your GAV, gross annual value। so ये 5 का हमारा हो गया, ठीक है। So now let us see what to do about 6th। Now see, when you talk about your rent received or receivable, so rent received or receivable here, actual rent received or receivable, it will be only there for your the period of stay। यानी आप अगर 10 महीने के लिए रह रहे हैं तो ये 10 ही महीने के लिए रहेगा, उतना ही रिसीवेबल है ना आपका। जो 2 महीने है ही नहीं वो रिसीवेबल नहीं रहेगा, ओके। तो सिंपल लॉजिक है, जस्ट रिमेंबर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है। तो आपका प्रीवियस ईयर ही अगर 10 महीने का है तो उतना ही रिसीवेबल रहेगा, ठीक है। तो ये 10 हो गया। अब ये जो फिगर्स है आपके, these figures, your GMV, fair rent and standard rent, because these are government figures, they will give it for the whole year, 12 months, correct। So which is why for these figures, if it is for 10 months, your period is 10 months, you have to take proportionately, यानी आपको इसको सबको जो है ना into 10/12 करना पड़ेगा 10 months के लिए। So what I'm saying basically, for these things, these are government figures, so they will not give for you, they'll give for 6 months, for me they'll give for 8 months, they won't do like that, right? They will give you one annual figure, so that's why you have to do is into 10/12. Sorry. Okay, just do into 10/12. Whatever you will get, that will be for 10 months, okay. That is the only change here, and then we'll use this 100 rent received or receivable as it is, because this is for 10 months, which is why I'm not doing anything to it। You're getting the point, ठीक है, समझ गए ना। ये एक्चुअल रेंट 100 जो है आपका रिसीवेबल 10 महीने के लिए, 2 महीने आपने रेंट में दिए ही नहीं उसको। प्रीवियस ईयर 10 महीने का है, इसका मतलब है कि आपने 10 ही महीने को रेंट को दिए, ठीक है। तो चलिए इनटू आप करके देख सकते हैं कैलकुलेटर में, यू कैन जस्ट डू इनटू 10/12 फॉर ऑल दिस एंड सी वेदर हमारा सर ये मैच करता है क्या, देखिए आपको। सर क्या हम मतलब उसी बेसिस पे RER आरईआर निकाल के को अगर हम 10 मंथ्स कर दे तो चलेगा वैसे? चलेगा, वो भी चलेगा।
ठीक है, वो भी चलेगा, क्योंकि देखिए जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। अब अगर सेम रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 180 इसमें भी सबसे बड़ा है, वो 10/12 भी 180 बड़ा ही रहेगा, करेक्ट। तो आप वैसे भी कर सकते हो, वो भी ठीक है। ओके, उसके बाद में भी आप नेट इसको इंटू 10/12 कर सकते हो। ठीक है, अगर अभी इसको ऐसे किए तो क्या आ रहा है आपके, मैच हो रहा है 150 140 150 मैच हो रहा है क्या जरा, 150 140 है पहले दो का, Yes. और Yes, हायर sir. है उसका 150 आता है। तो बेसिकली इट इज 150 and 140. Okay, when I multiply your H6 values by 10/12. Okay, so the higher is 150. Then I'll put standard rent 120. Again, this is 10/12 value. Okay, and then lower of these two is 120. So I got 120. ARR will be 100. We won't change. Now higher of these two is 120. So this is how we get this answer. Okay, got it? So any questions I'll take after coming back. Okay, thank you. Join me back by let's say 8:55 today. Okay, 8:55. 8:55 today. Okay, sir.